Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you are doing well, staying healthy, staying safe, and rooting for Sushant Singh Rajput. Um, it's a black day for all of us, for people around the world. Nobody can forget what happened on 14 June 2020. Um, you know, uh, it's really सैड टू सी कि आज भी 3 साल के बाद भी लोगों को बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, जताना पड़ रहा है कि सुशांत के साथ क्या हुआ. बट डजंट रियली मैटर. वी विल कंटिन्यू टू टॉक फॉर सुशांत, फाइट फॉर हिज जस्टिस टिल द वेरी एंड. आज के दिन आई have no idea how Sushant's family would be feeling. I saw some posts. श्वेता ने कुछ एक पोस्ट किया था एंड for them, I'm sure their brother is always around them, always. But it's really difficult. They will continue to go through till justice is served. So all we can do, all what we all can do, is just pray, and send all the love and positive vibes to the family so that they stay motivated, they stay charged up to get justice for Sushant. Uh, I will take you. Hello, Anam. I see you already in the background. So before I do that, let me just play this, and uske baad I will start taking all of you.
Hey, Anand. Hi, Varun. It's just a message because today's the saddest day for all of us that we have kind of lost a gem of a person, and that's why I want a message because I want to share the grief. I wanted to share your grief with same people who are on the same wavelength and who are fighting for for justice for him. So I was feeling like I wanted to share my grief, and so thanks for coming live, and and I thought that you will definitely try to on today, and so it's just one of those days that we should never forget in the history, that but he was just such a hardworking, talented guy that I think his star just kind of shined everyone like and उनको चुभ रहा था like just कहते हैं कि उसकी स्टार अच्छाई and उसका talent और लोगों को चुभ रहा था then they couldn't kind of accept his kind of talent, and so I think he just didn't couldn't get the due that he deserved, and so it was just one of the saddest day, and we have to keep kind of our focus strong to even today, that and let the family know that we will never forget and we would keep fighting till we don't get the 302 because we started something we should finish it till the end. We should not kind of lose our hope and our strength, and so and because we want to make it a historical moment and give the justice that he deserves. So because regardless whatever must have happened, he was a human after all. Like it's every human deserves kind of justice, and I believe we already given him justice in these 3 years of 3 years, that we have kept him relevant and in our hearts and our minds, and people are shouting for him. And so I think that's the justice that both Disha and Sushant deserves. That people are fighting for their justice, and so I think we have given them justice of remembering them all these years. And I think the people who did this, they thought people would forget this by time, and they would get tired of kind of shouting. But we should not let them win. We should not get them think that we will ever forget that whatever's happened with them, that they will get away with it, so that they don't do it with anyone else, because they think that if you've gone away with this, we can do it with someone else as well. So we have to keep our focus strong, our faith strong, and keep the family in our mind, that if they haven't forgotten, we should never forget that. So thank you so much, Varun. I won't take much of your time. Other people are there as well, and so thanks for coming No, live thank and you. just Sure, Anam, and thank you so much. I when you pinged me, right, I was about to set up the session. So, Aj, so definitely, I had to come live. Actually, I'll be coming live again later in the day, um, when we'll maybe try to showcase some protests as well. But ye wala session I really wanted to do, where I wanted people to come out and share, how they are feeling today. It's a very sad day. It's a very tough day, especially for the family and also for those warriors who've been standing there since day one. Remembering Sushant today, or is really tough. Is Yeah, it's really heartbreaking to see कि 3 साल हो चुके हैं and there is nothing, no updates, no progress. But we want to thank you for raising your voice as well, speaking up in all the forums that you do. So each voice matters, each face matters, and each tweet matters. So thank you for being that person. No, no, I get that all because of the strength from you guys, and so it's not, I should not take the credit, and so I feel that if I do give him justice, I feel like I have accomplished something in my life. So it's all because of you guys, and Shashan made us, kind of made us feel that we should also fight justice for people, because if he was alive, he would have fought justice for people as well. So I always think like him. If if we learn something from him, so that he feels happy that his life hasn't gone been wasted. So if we follow one of his principles, so I think he'd be very much happier in wherever place he is. So
I think that's what I always wanted to follow, his kind of ideologies, principles, and so that my life gets better as well. So well, yeah, we should kind of learn from him, so that fighting for him, we should learn from him, and just remember that one if we make it a historical moment, maybe there's a time where he will get justice. You never know in life. It's just life is can be unpredictable sometimes. So things can change dramatically, and so hopefully one day he will get the justice he deserves. So thank you so much, We, Varun. sure. Thank you, Anna. Hi, Sonal. Hey, Rudra. Please go ahead, Sonal. Yeah, hi, Varun. Hi, hello, Anam, Rudrava. Um, it's a very sad day, of course. Days leading up to this day it becomes very tough, even for us warriors. So I can't even imagine what the family goes through. Um, so it's a mixed feeling. Sad, angry, frustrated at the agencies and authorities and whoever is not responding and not doing anything. Um, but we collectively manifest that Sushant get justice. And of course, till then, we'll continue doing whatever we can in our capacities. Um, a collective prayers to Sushant's family, um, dad, and Priyanka di, Shweta di, Rani di, um, Mitu di. That God give them strength to go through what the grief and whatever else they are facing. Um, and big hugs to warriors. I know it's not easy for a lot of warriors. It's we don't even know because we've not been through this before. We don't even know how to process our emotions sometimes. Yep. We just we don't. It is sometimes it's very confusing. We feel sadness and anger and frustration um, all at the same time. But big hugs to warriors for still standing strong and fighting for Sushant. Um, we'll keep doing that. Didn't know that even after 3 years we would be standing here and still asking for justice, and no one's even bothering to respond. It shouldn't be that way, right? I mean, there should be some accountability. So we just keep doing whatever is in our capacity. Yep. And as Ashnurji is saying, we have to tweet, retweet, quote tweet, comment, whatever it takes digitally we can do. Um, those who cannot go on the ground, we should continue doing that. Let it be the loudest roar ever. And yeah, and thank you for this platform and for continuing to raise voice for Sushant. We Sure. love him so much, and it's just the video that we were seeing. You just played. Just can't imagine how can someone take away such a beautiful soul, such a kind-hearted person. Can't even imagine that person doing any harm to anyone. It's just very sad. But thank you so much, Varun, for this platform. And Thank you. I will definitely talk about one thing at the very end, which you just mentioned, um, and I'll keep it short at the end. But uh, none of us imagined in our wildest of dreams कि 3 साल पहले हम इस तरह से किसी इस कॉज के लिए इकट्ठे होंगे. 3 साल से we have been talking, we have been making noise, social media and otherwise, ground pay, and that's what I'm going to talk about in the very end. That it really doesn't matter if you are in India, if you are in US, if you are in Canada, anywhere or wherever you are. आप ग्राउंड पे जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या नहीं हैं, every single tweet, every single message, every single comment, every single act matters. So, in whatever way capacity, I've always said it, you do it, that matters, and that is all what is required. सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा शोर, जितना ज़्यादा नॉइज़ हम मचा पाएंगे, and we keep this movement alive through social media, the same pressure will apply on other agencies. They will also be frustrated that they might have thought एक साल नहीं तो 2 साल में ये सब खत्म हो जाएगा, but year on year till the time we don't get
complete justice, we will not stop, and that will definitely have to continue, no matter how long it takes. So hum sabko, we have to continue in our special way. So thank you, and I'll speak about that social media and the importance of tweeting, retweeting at the very end also, because that's the least we can do to support this movement, to support this cause, and to support the family who definitely doesn't need any of our help, but this is the least we can do to them. So thank you once again, Sonal, for playing an integral and a very key role on social media as well. Thank you, ma'am. Bye. Thank thank you, Rudra. Please, I know. Okay, why don't you to talk? You're mute. Yeah, thank you so much. I guess I'm audible. I'm Yes, audible, right? yes, yes. या आई एम सॉरी, मैं बाहर हूँ तो किसी कारणवश से इसलिए आवाज़ थोड़ी बैकग्राउंड आ रही होगी। तो या जस्टिस फॉर एसएसआर, बॉयकॉट बॉलीवुड फॉर एवर। और जो भी मैं कहूँगा उसके लिए आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, एंड मैं अपने डिस्कशन पे कहने जा रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं। पहली चीज़ कुछ हम्बल रिक्वेस्ट ही है, बिकॉज आई कैन ऑल आई कैन डू मेक सम हम्बल रिक्वेस्ट कि देखिए, फैमिली ने अपना अपना भाई खोया है, अपना बेटा खोया, अपना सगा खोया है। और कंपैरिजन की तो दूर दूर तक की बात नहीं है, वो पेन कभी, जैसे सोनल जी ने, उसके पहले अनम जी ने और आपने भी बहुत अच्छे से कहा, तो उसका तो कुछ है नहीं वो कंपैरिजन का। तो इसीलिए, और दूसरी बात यह है कि हम हमारा देखा जाए तो ऐसे वी आर जस्ट द फैंस, तो ये अच्छा नहीं लगता कि हम फैमिली को इंस्ट्रक्शन दे, ये बोले कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्या पता वो सारी चीज़ों को देख के वैल्यूएट करके अपने हिसाब से वो सोच रहे होंगे, अपना कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन हम और मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ अपने एक्शंस की, कि क्या मैं कर सकता हूँ अपने कैपेसिटी में। तो अगर वो चीज़ पे भी हम करते रहें तो दैट विल बी ग्रेट। अगेन, ये मेरा हम्बल सबमिशन और रिक्वेस्ट है। अगेन, आई एम नो वन कि मैं किसी को बोलूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट आई एज एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज इंश्योर कि जो मेरे से बन पड़ेगा अपने लिमिटेड कैपेसिटी में उसको करता रहूँ, ये ना बोलते हुए कि फैमिली को या किसी और को कि उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अच्छा, फिर से मैं पूछ लूँ कि मेरी आवाज़ तो आ रही है ठीक से, राइट वरुण भाई? Yep. ओके, परफेक्ट। और एक चीज़, अब कुछ चीज़ें ब्लंटली कहनी होगी क्योंकि 3 साल हो गए हैं, और 3 साल हो गए तो कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सैड अफेयर है। और उससे भी बुरी चीज़ जो है वो है कि 3 साल हो गए, अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं हुआ, जबकि जिया खान के केस में कम से कम क्या कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1 डेढ़ साल के अंदर चार्जशीट तक तो कम से कम आ गई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे तो चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो हैविंग सेड दैट, तो ये बहुत ही सीरियस केस है, सीरियस मैटर है। ऐसे केस में कुछ चीज़ें ब्लंटली कहना चाहता हूँ। तो जो 3 साल में मैंने ऑब्जर्व की, और आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने भी किया होगा, कि बहुत सारे लोग प्लांट किए गए जो आज के टाइम पे बहुत ही अच्छे से एक्सपोज्ड हैं। वो कोई भी हो सकता है, करप्ट एमएलए हो सकते हैं, करप्ट पॉलिटिशियन हो सकता है, करप्ट ब्यूरोक्रेट हो सकता है, एलिजेड स्मगलर हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक या वाना बी एडवोकेट्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आए और प्लांट किए गए। और कैसे, किस बेसिस पे कह सकता हूँ कि जब भी कोई सही स्टेप, कोई भी एसएसआर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वरुण कपूर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन एंड एवरीवन, कि जिन्होंने भी राइट स्टेप लिए, जहाँ पे कि लग रहा था कि ये जो ऑल, ये क्या कहते हैं, हाई एंड माइटी है, ये कटघरे में आ रही है, इनके ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो तभी एक चाहे वो स्मीयर कैंपेन चला, चाहे वो पर्सनल टारगेटिंग चली, मैन टू मैन मार्किंग की टेक्निक चली, बहुत सारी चीजें हुई। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे या तो वॉरियर्स छोड़ के चले गए, या बहुत सारे जो अच्छे प्रोसेसेस हो रहे थे वो बंद हो गए। तो अगेन मेरा हम्बल सबमिशन ये रहेगा, वरुण भाई, अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपका गोल्डन बटन वाला जो टेक चीज था वो बहुत ही सही था, बहुत ही सही चीज थी। उसको मुझे ऐसा लगा कि ऑन पर्पस उसको बहुत से लोग रुकवाना चाहे, और ये तो मैं फुल अथॉरिटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि ये चीज हुई है। तो उसमें क्या था कि जैसे बहुत सारे एलिगेशंस लगा गए, खैर लेट्स नॉट गो देयर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम फिर से, क्योंकि अब सीबीआई के डायरेक्टर चेंज हुए हैं, और गीता क्या कहती है कि कर्म करना हमारे हाथों में है। तो वही चीज है कि फिर से मेल भेजना, फिर से ग्रीवांस जो पोर्टल है वहां पे डालते रहना, क्योंकि ये हमारे कैपेसिटी में है। मतलब ठीक है, जैसे आज मैं किसी कारणवश हॉस्पिटल में, तो हो सकता है मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता हूँ, बट एटलीस्ट हमारे सबके पास मोबाइल डिवाइसेस है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, तो हम ऑनलाइन पोर्टल में ग्रीवांसेस फाइल कर सकते हैं, और हम ईमेल कर सकते हैं। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू, और उसको हम कोर्ट टू ट्रीटी जैसे किन्हीं ने बोला हुआ था वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे एविडेंसेस जो नए सीबीआई आए हैं उनको भी मेल करो, लेटर लिखो, जो बन पड़े करो, जो आपको सही लगे वो करो, क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है।
ये चीज आप लिख के रख लो। और ये चीज है कि चीजें रिकॉर्ड पर रहती है, क्योंकि मेल मेल पे अगर आपने कोई चीज भेजी है तो कम से कम कल को ये रिकॉर्ड रहेगा कि यू हैव सेंट समथिंग, ठीक है, और अगले को मिला है, उस पर एक्शन हुआ है नहीं हुआ है वो ठीक है, उसके लिए एजेंसीज ऑब्लाइज्ड नहीं है, बट आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। तो चीजों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, नहीं है और भी चीजें रिकॉर्ड पर लाओ, ग्रीवांसेस फाइल करो, कलम की ताकत बहुत ज्यादा होती है, प्रोटेस्ट तो बिल्कुल करते रहो, हर एफर्ट अपने आप में। और कोई अगर ट्वीट भी कर रहा है तो वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छी एफर्ट है। तो कैसे भी है तो आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि हम ऐसे सारियंस का तो भैया एकदम ठान के बैठे हैं कि जब तक 302 तो बहुत इनिशियल लेवल की बात हो गई, जब तक मर्डरर्स की जो सजा होती है, अगर फांसी होती तो लेट इट बी फांसी, तो जब तक वो नहीं हो जाती तो तब तक भैया हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो यही मेरे कुछ हम्बल सबमिशंस थे। अगर मोल्स को, प्लांटेड करप्टेड एमएलएस को, वाना भी पॉलिटिशियंस या पॉलिटिशियंस को, करप्टेड जो प्लांटेड ब्यूरोक्रेट्स थे उनको, या फिर अपॉर्चुनिस्टिक एडवोकेट्स को बुरा लगा हो, तो आई एम नॉट सॉरी। थैंक यू सो मच। जस्टिस फॉर एसएसआर, बॉयकॉट बॉलीवुड फॉर एवर। वेरी नाइस, वेरी। एंड एक चीज मैं कहूंगा, अभी वैसे भावना जी जब भी ज्वाइन करेंगे, आई थिंक उनका शायद नेट का इशू है, बट मैं इस सेशन पे आने से पहले एक वीडियो देखा था जो अभी किसी ने पोस्ट किया था, जहां पर यू एंड भावना एंड मेनी अदर वर रोरिंग, एंड स्पेशली विद योर क्यूआर कोड का वो जो फ्लायर, एंड भावना जी की वो आवाज, वो जो loudest roar वो करती हैं. I think she's lost her voice couple of times doing that, but that was so energetic and that was so inspiring. I think each one of us is really grateful, thankful for whatever you have done, and I'm sure there are many things. And thanks for that suggestion again. Let's do it. I will enable that golden button. Let's get the और, content ready. और एक चीज मैं बोलूंगा, और एक चीज मैं ये भी हाँ, बोलूंगा कि पता सबसे बड़ी बड़ी इंस्पायरिंग चीज क्या है भाई, सबसे बड़ी इंस्पायरिंग चीज कि 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं और हम जस्ट के तस डटे हुए हैं। और हो सकता है कई बार हम दौड़ेंगे, मैंने आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जापानीज प्रोवर्ब है, जिसका मतलब है कि अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो जब तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो एटलीस्ट क्रॉल करो, बट आगे बढ़ते रहो। तो जो भी कंडीशन हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सबसे इंस्पायरिंग चीज है कि आज 3 साल बाद ये यूट्यूब लाइव हो रहा है, लोग कमेंट में जस्टिस फॉर एसएसआर लिख रहे हैं। तो जितने भी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, सब के सब इंस्पिरेशनल वॉरियर है, ईच एंड एवरी वन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बट हम सभी एक दूसरे से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, तो मोर पावर टू एवरीवन। हम जीत के रहेंगे। बिल्कुल जीत के तो रहेंगे. So thank you once again. Thank you for inspiring and keep doing what you're doing. लोग जो मर्जी सोचे समझें, we are not here for anybody else but only for Sushant and for supporting the family. So we'll continue to play our part. Let's create that email content. Let's enable that golden button again and let's start this with a new set of energy. एंड में एक और चीज़, 2 पॉइंट्स, जैसे एक पहले सोना ने बोला और इससे रिलेटेड भी मैं एक चीज़ बोलूँगा गोइंग फॉरवर्ड, बल्कि मैं अभी बोल सकता हूँ थोड़ा सा बिफोर आई लेट यू स्पीक. आज से ही 14 जून 2023 से ही, if anybody wants to unfollow me just because I'm gonna be very harsh and very rude against certain more people, then you can. आज की डेट में अब I am done with being politically correct. आज से वरुण कपूर, I don't know 3.0 है या 4.0 है, I'm not gonna be politically correct. I'm gonna be very 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 aggressive. क्योंकि 3 साल में हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारे कहते हैं ना मुखौटे उतरते हुए देखे हैं सामने. And continuously these politicians, these leaders, these parties, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिसने जो कहना है कहे. I am not affiliated with any single party. I have no plans to be affiliated with any party, but I will definitely be putting a lot of stuff around certain people, leaders, bureaucrats, and whatever. If you don't like it, please feel free to unfollow me. I will not give a, whatever to it, but I will ask questions. I will raise those points. I will put across points which are right, and we will not stop. क्योंकि सुशांत के साथ जो हुआ वो कोई मजाक नहीं हुआ. He was killed. He literally brutally was murdered. So end of the day, we have all the rights to get justice for him,
and we will continue to raise questions. All right, looks like he got dropped off. So please, Ayush, go ahead and welcome Chitali. नमस्ते Namaste. Yes. जस्टिस फॉर एसेंस सर 3 साल हो गए आज सोच के भी बड़ा धक्का लगता है वो रात जब सब लोग सो रहे थे खास तो एक इंसान ये सोच रहा था कि कोई आएगा मुझे बचा लेगा लेकिन काश ये ऐसा ना हो सका हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक एसएसआर को जस्टिस नहीं मिल जाता और मोर पावर टू और वॉरियर्स चाहे वो कोलकाता के हो चाहे वो ये रुद्रबा भाई जैसे हो चाहे चैताली जी जैसे हो कि कंटिन्यूअस अपनी आवाज ग्राउंड पे रोड कर रहे हैं और कुछ हम जैसे लोग हैं जो डिजिटली कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हम इतने एक ऐसे सेलिब्रिटी का केस जो इतने लंबे समय तक चल रहा है आज तक कभी नहीं हुआ तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि इस मोमेंट को आपने अलाइव रखा हम सब, we all यस together, you, me, Chetali, everybody has played. और मैं वही कह रहा था, हर एक वॉइस मैटर्स, हर एक ट्वीट मैटर्स, हर एक फेस मैटर्स, हर एक gesture matters. So yeah, we all will continue no matter what. थैंक यू Thank you so much, Ayush. Keep on doing what you're doing, and let's roar for Sushant. Hello, Chetali, and welcome. And before you speak, once again, thanks for that amazing drive. You know, for the thalassemia patients, it was really special to be part of that. And please go ahead. आज इस दिन पे आप क्या कहना चाहती हैं? Please go ahead. Hello, Varun. I just wanted to say that 14 June definitely is a black day for all of us, all necessarian globally, right? आज जो इतना बड़ा मूव 14 जून में वो इंसिडेंट होने के बाद आज ग्लोबली इतना बड़ा मूवमेंट बना है पीपल अक्रॉस द ग्लोब कनेक्टेड फॉर अ कॉज एंड ऑनेस्टली हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वॉरियर जो 3 साल से constantly they are raising voice for Sushant's justice. See, we used to be a very big fan of सुशांत हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुशांत की जस्टिस के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा ऑनेस्टली बिकॉज कैलकाटा पे हम लोग का प्लान था यही से कि सुशांत when he came in Calcutta for the bomb case बख्शी का प्रमोशन और कैलकाटा पे he stayed for a long time जब उनका शूटिंग चल रहा था तो on that time like you know we didn't manage to meet him somehow we were also engaged तो वो नहीं हो पाई so we were eagerly interested सुशांत next कब मूवी का प्रमोशन के लिए कैलकाटा में आएगा and हम लोग का जो एक strong fan base था सुशांत के लिए we all will be planning for that कि हम लोग सुशांत से मिलेंगे ठीक है इनफैक्ट हम लोगों का ग्रुप में ऐसा भी कुछ फैंस है जो सुशांत की फोटो फ्रेम भी रेडी करके रखा था कि हम लोग जब मिलेंगे सुशांत के साथ हम लोग कैलकाटा की एंड से उनको फ्रेम गिफ्ट करेंगे यू नो एज अ अर्डेंट फैन ऑफ हिम बट हम लोग ने कभी सोचा नहीं था वरुण कि इनकी जस्टिस के लिए हम लोग को लड़ाई करना पड़ेगा ऑनेस्टली वी हैव नेवर थॉट ऑफ एंड हम लोग ना आज तक वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट ही इज नो मोर लोगों की इतना स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना कैलकाटा पे am I audible Yep. Yep. एक्चुअली कुछ बैकग्राउंड पे शायद नॉइज है सिंस आई एम आउटसाइड हम लोग का यहाँ पे इतना इमोशन है स्ट्रॉन्ग सुशांत के लिए आज तक हम लोग यूजुअली कोई भी एक्टिविटी में ना हम लोग माला नहीं चढ़ाते हैं सुशांत की फोटो पे क्योंकि वी कांट यू नो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज को अभी भी दैट यंग प्रॉमिसिंग एक्टर इज नो मोर तो हम लोग नहीं माला माला नहीं डालते डेफिनेटली वी ऑफर हिम फ्लावर एंड ऑल वो ना बहुत यू नो इट्स अ लॉट ऑफ पेन टू गिव माला चढ़ाने में ना बहुत दुख होता है ऑनेस्टली और हम लोग ने कभी सोचा नहीं था देखिए एक चीज बोलूं किसी का लेगेसी में काम करना अलग चीज होता है अगर कोई इंस्पिरेशनल पर्सन है इफ द पर्सन इज अलाइव तो भी हम लोग उनकी लेगेसी में काम कर ही सकते हैं वो कोई इश्यूज नहीं है बट
जिनके लिए हम लोग वी ड्रीम्ड फॉर, हम लोग सुशांत से मिलेंगे, वी विल गिव हिम फोटो फ्रेम। हम लोग का कैलकाटा पे एक आर्टिस्ट है, एक्चुअली ही इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। वो ना पोर्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर में रहता है। तो उनके पास पोर्ट्रेट अभी भी रेडी है। ही कांटेक्टेड मी कुछ साल पहले कि हम लोग सुशांत से मिलेंगे तो वो हैंडमेड पोर्ट्रेट हम उनको गिफ्ट करेंगे। हम लोग का ये प्लान था जब सुशांत कोई भी मूवी प्रमोशन के लिए कैलकाटा पे आएगा, बिकॉज हर एक बार ही यूज्ड टू कम फॉर हिज मूवी प्रमोशन। यहाँ पे सिटी सेंटर है, ही यूज्ड टू कम फॉर द मूवी प्रमोशन इन कैलकाटा। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनका जस्टिस की लड़ाई लड़ना पड़ेगा एंड उनके सामने हम लोगों को दिया ऑफर करना पड़ेगा। ऑनेस्टली दैट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, तो जब भी हम लोगों को कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ता है ना, वी इवेंचुअली गेट वेरी इमोशनल, क्योंकि हम लोगों ने मतलब सोचा भी नहीं था। वी हैव टू फाइट फॉर हिज जस्टिस। अब व्हाट हैपेंड, जब ये इंसिडेंट हुआ था 14 जून को, तो on that day, actually I was in some of the work, so one of my family member called me up, and तो टीवी पे ना न्यूज चल रहा था, so I went and watch it. इनिशियली एक दो दिन तो मतलब इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे कि दिस थिंग कैन बी हैपन। और सुइसाइड का तो कोई सीन था ही नहीं, वी न्यू इट समथिंग वेंट वेरी वेरी रॉन्ग। तो इवेंचुअली ऑन दैट एक दिन दो दिन के ही अंदर ही जो कैलकाटा में सुशांत के जो फैंस थे, हम लोग सब मिलके वी फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड देन वी डिसाइडेड नहीं, इनकी जस्टिस के लिए वी विल फाइट टिल द एंड ऑन। एंड ऑनेस्टली तब वरुण हम लोग किसी को नहीं जानते थे, नो वन। सो हम लोग अपना लिए थे स्टैंड कि वट एवर हैपन हम वी विल स्टैंड फॉर हिज जस्टिस। एंड लेट मी टेल इट टू यू, इन दिस जस्टिस कैंपेन, the very first ever protest that happened in Calcutta, okay, in the month of July, तब लेकिन कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। जुलाई का मंथ था, तब बारिश का मौसम था कैलकाटा पे, और कोविड तो तब पिकअप में था, कुछ भी मतलब ये स्ट्रिक्ट रूल्स था। उस कोविड में भी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड न्यू मार्केट इन कैलकाटा, इज अ मार्केट प्लेस। तो वहां पे हम लोगों ने परमिशन लेके बारिश में भीग के कैंडल्स जलाए थे सुशांत के लिए। तो उसके बाद से इवेंचुअली पीपल केम टू नो, हाँ वी हैव टू कम इन रोड एंड फाइट फॉर हिम। तो उसके बाद से इवेंचुअली बाकी जो स्टेट्स है, दिल्ली एंड अदर स्टेट्स, दे आल्सो केम फॉरवर्ड। एंड ऑनेस्टली तब से हम लोगों ने प्रॉमिस तो कर ही लिए थे, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा वी विल, हम लोग जस्टिस के लिए वी विल कीप फाइटिंग। दिस इज अ थिंग। तो इंडिड आई टेल यू ऑनेस्टली, आई वाज पैकिंग माय बैग्स राइट नाउ, क्योंकि हम लोग का प्रोटेस्ट है तो मुझे निकलना है। तो बैग में सुशांत की फोटो के साथ जब मैं वो दिया वगैरह पैक कर रही थी, आई वाज गेटिंग वेरी इमोशनल, क्योंकि सिंस हम लोग दिल से उनको इतना प्यार करते हैं ना, ये चीज सच में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है दैट ही इज नो मोर। टुडे इज अ वेरी इमोशनल डे फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सुशांत के लिए सबका दिल में कितने इमोशंस है ना, वो सुशांत का वॉरियर्स छोड़ के जेन्युइनली और कोई फील नहीं कर सकता, जेन्युइनली। एंड अगर ऑनेस्टली मैं बोलूं, अगर हम लोगों के ऊपर ये कैलकाटा वॉरियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता ना, तो शायद आज हम लोग घर में ही बैठ के उनका फोटो लेके सामने बैठ के बस मेमोराइज करते दैट पर्सन को। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट में भी जस्टिस की लड़ाई लड़ना चाहिए फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज पीपल मस्ट विटनेस that we have not forgotten him and the fight for justice is still on. So with a very heartbreaking mind, we have to be in the ground and we have to roar demanding for his justice, क्योंकि 3 साल तो हो गया है, जस्टिस तो उनको नहीं मिला है अभी तक। रही बात एजेंसीज की, वी नो वेरी वेल क्या स्टेटस है उन लोगों में, दे आर सो मच इनएक्टिव। बट टुडे इज इंडीड अ वेरी वेरी इमोशनल डे, अ हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग सब जो सुशांत के फैंस थे ना, उनकी सामने दिया रखना इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग, ऑनेस्टली नहीं होता, इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट जो भी है, वी हैव गिवन अ प्रॉमिस टू सुशांत। uh, in different difficult to difficult scenario also we are going to keep fighting for him, जो भी हो जाए। negative environment है, people are trying to sabotage the movement, political leaders are playing their game, जो भी हो जाए, we ain't going to divert from our main focus। And all the SSRians across the globe,
uh, we all can do one thing. हम लोग का सबके पास सुशांत का एक तो फोटोज तो है ही सबके घर पे. At least we can put a photograph in front of us and we can place a candle, we can put some flower, and for 2 minutes we can pray for him. This Yeah. much I think we all can do is the biggest ever respect. The way we can pay him respect, and ऊपर से of course सुशांत भी सब कुछ देख रहा है. उनका एसेसरियंस लोग, you know how the way they are fighting. एंड वन थिंग अबाउट द फैमिली, हम लोग तो फैंस है ऑनेस्टली, और मैं तो कभी मिल नहीं पाई उनसे, वो मौका नहीं मिला था. उनका फैमिली मस्ट बी, फैमिली का क्या कंडीशन है वो भी वी नीड टू थिंक वंस. दे मस्ट बी वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. उन्होंने इतना साल स्पेंड किया है अपना भाई के साथ, उनका पापा, तो दे मस्ट बी वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. एटलीस्ट आज का दिन तो लोगों को रियलाइज हो जाए कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह कैंपेन पे लेट्स नॉट टारगेट फैमिली. दे आर ऑल्सो वेरी हार्ट ब्रोकन. उनका भाई गया है, उन्होंने इतना 34 ईयर्स दे हैव स्पेंड विद देयर ब्रदर. और शायद वो लोग, वो कभी, वो उनकी जो फैमिली से सिस्टर, दे नेवर कम इन द लाइफ और दे हैव नेवर क्राइड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इमोशन. शायद आज का दिन लोगों को रियलाइज हो जाए उनकी 3 इयर्स की डेथ एनिवर्सरी में कि इस कैंपेन में एटलीस्ट उनकी फैमिली को टारगेट नहीं करते हैं. Rest, who all are watching the session, all the Ssarians across the globe, let's like put a candle in front of his picture, put some flower, and let's do a heartfelt prayer. Wherever he is, he must be happy now. And Aaj, since his third year of death anniversary of Sushant, is a very crucial day for all of us. So we Calcutta Warrior have organized a ground protest सिंस जस्टिस की लड़ाई भी बंद नहीं होना चाहिए. आई नो वरुण का प्लेटफॉर्म काफी सारा कैलकाटा वॉरियर्स देखते हैं. सो इफ यू मैं थोड़ा सा एक बार बोल देती हूँ वेन्यू वगैरह. प्रोटेस्ट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स. टाइमिंग इज 4 p.m. to 7 p.m. and initially 1.5 hour we are going to do protest. After that we have a plan to provide him shraddhanjali. So, who all wish to join, please come, join. Let's pay tribute to our beloved SSR, all the Calcutta warrior. अगर आपको लगता भी है वेदर के लिए आप फर्स्ट आवर में नहीं आ पाएंगे, सिंस यहाँ पे गर्मी काफी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई कैन अंडरस्टैंड मॉर्निंग का टाइम में निकलना. ऑफ कोर्स यू पीपल कैन जॉइन इन द सेकेंड हाफ, जब हम लोग कैंडल लाइट प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग श्रद्धांजलि देंगे सुशांत की. इफ ऑल द सुशांत फैन हु ऑल आर वाचिंग, एटलीस्ट टुडे स्टेट दिस मच वी कैन डू फॉर हिम. And thanks to all the warrior globally who all are fighting in ground and in digitally, just like I see Bhavna has joined, कुछ देर पहले रुद्रा भी था. Yeah. uh, After we that, all are doing things collectively. I think this is the only reason the movement is alive. If people like Varun is doing this awareness sessions day by day, staying outside of India. And one more thing, India ka bahar बैठ के support देना भी is a big thing. People are watching this movement पे. So not only the Indians are fighting, people from outside India is also very deeply involved in it. So it means a lot. And भावना, दिल्ली में अगर कोई भी एक्टिविटी आज के लिए प्लान है, from my end wish you all the best. एंड ना भूले हैं ना भूलने देंगे. ऑनेस्टली कभी नहीं भूलेंगे. 3 साल की अगर जस्टिस के लिए हम लोग को 7 8 10 साल भी लड़ना है, लेट्स टेक द प्रॉमिस टुडे. जैसे आज हम लोगों में जो जोश अभी भी बाकी है ना, आई प्रे कि उनको जस्टिस जल्दी से मिल जाए, डिले ना हो. बट वी नो कि व्हाट दिव्या इज डूइंग जिया खान केस, राइट. अगर इन केस दे आर डूइंग द डिले, तो 3 साल क्यों 7 8 साल में भी हम लोग का जज्बा कभी भी नहीं कम होना चाहिए. वी आर गोइंग टू फाइट विद द सेम स्पिरिट, सेम डेडिकेशन. लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम आवर मेन फोकस. And with folded hand, I want to say a big sorry to Sushant Singh Rajput कि when he was alive तब शायद हम लोग कुछ कर नहीं पाए. अगर तब कुछ कर पाते तो आज शायद इस सेशन की जरूरत भी नहीं होता. So wherever you are, hopefully you are watching everything, and it's a promise to you from all the SSRians. We are going to fight for your justice till the last extent. Nothing but justice for Sushant Singh Rajput matter for all of us.
This much I would like to convey, Varun. We Thank you. all are Thank you getting for very joining. emotional, and Yeah, thank you so much for letting me speak. sure. And we will, hopefully we'll show everyone, what Kolkata does. So we'll talk later. Thank you so much. अब मैं ज़रूर चाहूँगा भावना को भी, और भावना मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैंने वो वीडियो देखा था सेशन पे आने से पहले, वेयर यू वर रोरिंग लाइक अ लायनेस, एंड रुद्रा भी था और बहुत अच्छा था. प्लीज गो अहेड, व्हाटएवर यू वांट टू से टुडे. आई सबको पहले तो सबसे पहले आपको पता ही है वरुण की जो आज का डे है चिताली, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे रहें एज अ वॉरियर बिकॉज यू गिव अस पावर स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली आप यहीं पे रहिए. और मैं ये चाहती हूँ कि आज का दिन तो आप सबको पता है 14 जून इमोशनल डे भी है, बट ऐसा भी नहीं है इस दिन को हम लोग वरुण भूल सकते हैं. दिल्ली में एक्टिविटी हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक्टिविटी हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट वॉरियर्स एक्टिविटी कर रहे हैं, बट आज हम लोगों का सेम कलकत्ता वॉरियर्स की तरह ही है. अभी मेरी जो टीम है, हम लोगों की सुशांत की जो टीम है दिल्ली वॉरियर्स, वो लोग अभी सीबीआई के पास हैं. ड्यू टू वेदर कंडीशन एंड माई हेल्थ कंडीशन मैं नहीं वहां पहुंच पाई हूँ. डेफिनेटली इवनिंग में मैं चाहती हूँ जितने दिल्ली वॉरियर दिल्ली एनसीआर में है वो 5 o'clock टू 7 o'clock के बीच में अगर हो सके पॉसिबल तो जंतर मंतर या सीपी के जो पार्क है, सेंट्रल पार्क, वहां पे मिले. और कांटेक्ट नंबर मैं वरुण शेयर कर दूंगी, आप सब जानते ही हैं, सब ग्रुप में हैं दिल्ली एनसीआर के, वो भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी. सबसे पहले वरुण मुझे यही बोलना है आपको कि शायद ये आपको पावर देने के लिए है शायद उसका मेरे थ्रू सुशांत ये बुलवाना चाहता है, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ चिताली, हम सब इधर सुशांत के रीजन से ही मिले हैं, बट एक बंदा स्टिल यहीं पे है आज तक, वो है वरुण. फर्स्ट डे वरुण ने हम सबको मिलाया. आज वरुण का फेस आप देखो, बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत सैडनेस उनके फेस पे दिखती है. सब लोग चले जाते हैं, आ जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बट एक ही बंदा एक ही जगह पे बैठा है, एक ही मूवमेंट के लिए, एक ही चीज के लिए, सुशांत के लिए. और एक ही मतलब मैं उसको 14 जून 2020 से देख रही हूँ. मैं यहाँ पे कोई प्रेज नहीं करने आई हूँ. मैं एक चीज हमेशा जब भी उनको देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मतलब कितने क्वेश्चंस उठते हैं, उसके बाद भी एक ही बंदे का फेस मुझे हमेशा दिखता है, जो हम के लिए हम सबके लिए एक स्ट्रेंथ है. और अगर हमें अपने प्रोटेस्ट को ऑनलाइन दिखाना है तो सबसे सबसे जो पहला माइंड में आता है वो वरुण कपूर आता है. और बहुत सारी बातें हम लोगों ने वरुण फेस की हैं साथ साथ बैठ के. बहुत सारे लोगों को आते जाते हुए देखा है वरुण, हम ज्यादा आप ज्यादा जानते हो, बट कौन अभी यहाँ पे है? सुशांत, आप. और आप हमें आने का मौका देते हो, याद दिलाते हो कि आओ, पीछे मत हटो. बट एक चीज दुखी करती है वरुण की, 3 years हो गए, हम लोगों ने शायद सोचा था कि 1 year में ही जस्टिस मिल जाएगा, रिमेम्बर, बट 3 years हो गए हैं और अभी भी स्टिल हम वहीं खड़े हैं जहां से थे. डेफिनेटली बीच में मूवमेंट बहुत आगे बढ़ गया था, ये मेरा मानना है, हम बहुत आगे चले गए थे वरुण. बट वही है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं लगता है कि जिसकी पावर, जिसकी वॉइस बहुत स्ट्रांग होती है उसको दबा दिया जाता है. आई डोंट नो, बट वही था कि हमारा मूवमेंट चैताली, आपको पता है, ऑल ओवर इंडिया और बाहर आउटसाइड इंडिया हमारा मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया था 2020 में. अभी भी हमने अपना मूवमेंट स्ट्रांग करना है, यूनिटी में रहना है. इट डजेंट मैटर कितने भी लोग हैं, सब अपना अपना एफर्ट करें, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी को भी डिमोटिवेट करे. आज फिर से हमें एक मौका मिला है, सुशांत का डे है 14 जून, सब लोग अपने वे से श्रद्धांजलि दें, अपने वे से करें. नो क्वेश्चंस टू एनीवन, बट डेफिनेटली आज से अगर हम लोग फिर से करें कि हम लोग किसी को कुछ ना बोलें, सिर्फ सुशांत को देखें, तो आज से वो फिर से बैक मूवमेंट आ सकता है. सब यूनाइटेड रहिए प्लीज. और मेरे को ये लगता है कि कुछ अदर्स मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, बट मुझे बोलना है वरुण कि आप स्ट्रेंथ देते हो. डेफिनेटली बाकियों के बारे में मैं नहीं बोलूंगी, आप हमारे लिए, सुशांत के लिए एक ऐसा चैनल, एक ऐसा यूट्यूबर जो आज तक टच से मस नहीं हुआ, वहीं पे है. 20 जून 2020 से टिल आज 14 जून आज 2023 तक यू आर हेयर.
सो इससे बड़ी बात किसी की भी नहीं हो सकती कि कोई क्वेश्चन करे। और वरुण, मैं एक बार फिर से लाउडर वे में बोलना चाहती हूँ, आज इवनिंग में फिर से आपको मेरी आवाज सुनाई देगी डेफिनेटली। आपको आप ज्वाइन अगर ले पाएंगे डेफिनेटली करिएगा। Sure, absolutely. बट मेरी आवाज फिर से वैसी है जैसे आप सुनना चाहते हैं। अभी मैं बहुत घर पे बढ़िया। हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सारे नेबर्स आ जाएं। बट जस्टिस फॉर SSR, वरुण, मुझे लगता है वो फ्लोर पे जाके जब हम जाते हैं ना, जब सुशांत की फोटो देखते हैं, वो पावर ना ऑटोमेटिकली आती है। अभी नहीं आएगी, डेफिनेटली इवनिंग में ग्राउंड पे आपको दिखेगा। मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी, आप सब जगह Sure. शेयर करना। और आपकी वॉइस, NRI जितने हैं, ऑल ओवर इंडिया जितने लोग हैं, जितने लोग मूवमेंट को छोड़ के जा चुके हैं, उनकी वॉइस हम सब है वरुण, जो हम सब यहाँ दिख रहे हैं। Absolutely. ठीक है, Absolutely. डजेंट मैटर, वो हमारे फैमिली मेंबर है, वो चले गए हैं, उनके पास अपना कुछ वर्क भी हो सकता है, बट मैं हूँ, आप हैं, चैताली है, सारे वॉरियर्स, मैं जिनके नाम नहीं जानती टिल अभी तक हैं, हम सब वॉरियर्स हैं। थैंक यू वरुण। Thank you so much, Bhavna. बहुत बहुत ही strong message, and I know I can't wait to hear your voice एक बार फिर से। एंड आई नो एवरीथिंग जो भी लाइफ में सबकी हो रहा है, आपकी मेरी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है। बट आई थिंक हम लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ सुशांत के लिए। यू सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि इग्नोर करो, चीजें हटाओ, साइड पे रखो। बट आई थिंक यू नो कुछ चीजें हैं जो उसी टाइम पे एड्रेस करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है, बट एंड ऑफ द डे द कॉज शुड नॉट सफर। सो इट्स अ ग्रेट मैसेज। लेट्स ऑल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम फिर से उसी पीक पे, उस एनर्जी पे लेके जाए इस मूवमेंट को, जहां पर ये मूवमेंट एक बार पहुंच चुकी थी। और आई थिंक यू रियली सेड वेल। सो आई कांट वेट टू सी योर वीडियो। और अगर आप लोग लाइव होंगे तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट एज वेल। आई थिंक वी आर गोना बी लाइव विद चैताली इन द इवनिंग। So let's amplify everything that each warrior is doing, and let's do it in Sushant way. So thank you once again, Bhavna. And before I let anybody else speak, actually everybody is talking about the tweet जो प्रियंका दी ने किया है. So let me just read that for all of us. प्रियंका दी ने अभी ट्वीट किया है, thank you for being you, my brother Sushant Singh Rajput. Our pious intention was always to change the world for good, and you worked so passionately hard for that. But never did we think it will play out like this. You had the courage to stand alone in the world and shine, but they took you away so mercilessly. And now I am made to stand alone. Nonetheless, you brought an awakening in the collective consciousness simply by being you. As a result, multitude of awakened souls can discern through the facts and situations and are raising relevant voices and concerns. That's your legacy and heritage. But in the God forsaken land, justice is still elusive. When will there be justice for Sushant Singh Rajput? Words betray their hollowness, and it can never convey, even remotely, what I am feeling today. Bottomless pit of pain and helplessness. But I am rock solid in my belief and hope that in the ultimate scheme of things, we will prevail. Miss you immensely, Bhai. 3 years of injustice to Sushant. We will definitely prevail. Um, this is, yeah, we can't um, feel the pain that Priyanka Di or the family would be facing. So more power to her, more power to the family. Anam, please go ahead. Yeah, hi again, Varun. I just wanted to say hi to Chitali and thank her for being such a strong warrior on the ground, because she gives everyone the strength on the ground, as Varun gave us on digital platform.
and so Chetali is a strong warrior on the ground. So I salute her for doing all the hard work, and so I just came in to say, kudos to her, and just to give her the strength, more strength to her, that I hope Shushan is giving her all the strength. I think she's getting all the divine power to do what she does on the ground. So it takes a measure of effort and hard work to do what she does. So I just wanted to say thank you, and to keep going, and keep having the focus and the faith that one day we will prevail. As we have to give the support to the sister, as she said on the Twitter just now, that we will prevail one day, and we won't give up. And so we should not let her feel that we will ever give up. She's not alone in this fight, and we will give the justice that her brother deserves. Thank you so much, Varun and Chetali. Thank you, Anam. This message, this tweet is kind of like sinking in now, and that one line, bottomless pit of pain and helplessness. Imagine, um, it's just not one day. It's just not 1 hour. It's every single day what Priyanka Di would be going through. And I just say Priyanka Di simply because she's the front face of this movement. She has to take everything head on, all the abuses, all the lies, all the you know अभी अभी मैंने फिर से कुछ abusers ट्रोलर्स को फिर से अटैक करते हुए देखा कि why family is doing this, why is family doing that. Shame on such people कि कम से कम आज का दिन June 14th तो छोड़ दो. You won't stop. I know you need some kind of importance, value, content, whatever BS you need, but at least spare them on this 14th. Yeah, कम से they're कम. inhuman. They're inhuman. They don't have any sentiments, and so that's just we have to just keep telling her that there are humans as well in this planet, that who are also have unstoppable kind of strength, not to stop for giving fighting for justice for her brother. So if she gets that power, I think she will definitely won't feel the what she's feeling today, like because she feels that she's having no support right now. But we have to let her know that she's not alone in this fight. There's lots of us in this moment who are fighting, and we won't stop till we don't get the 302 for her brother. Absolutely, very well said. And I wanted to kind of मैंने पहले भी flash किया था, but I just want to kind of read this message for everyone. Beautifully written, Priyanka. Let's draw strength from the universal consciousness. There is abundance of light, and come what may, and nothing can overpower the divine intervention. May you be the one with the light, dear Sushant. He indeed is. He's the one who is, fighting this battle for himself. हम लोग तो सिर्फ we are just observers. That's how कि हो क्या हो रहा है. But today, on this very 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 sad day, sending all the positivity and love to Priyanka Di. I wish I was there. I wish I could be there. But you know, let's all pray for this family. They've gone through a hell, and they're continuously being pushed through hell every single day, every single hour. But still, they're drawing some strength from that amazing soul. Sushant, wherever he is, I'm sure he's sending his love and And vibes to. also they also lost Fudge as well, like Yep. something that could remind them of Sushant, because he was very close to Fudge. And just earlier you just showed a video of Fudge, and so it was just too much emotional, like today, like even we lost Fudge, the family lost like
is something which can remind them of Sushant as well. Like they don't even have that as well. So we have to be more stronger for them and say that they're not alone in this fight. So yeah, we have to keep our focus and our faith very strong. Absolutely. All right. Thank you very much, Varun. Thank you, Thank you, Anand. Lee. Thank you, Sure. Chetali. Keep doing the good work, and I will keep tweeting and keep fighting and keep fighting for 302 for Sushant. Thank you so much. All right. Thank you again, Anand. Thank you, everyone. Chetali, anything you want to say? Because I think we should all um, pray and remember Sushant now, especially after this beautiful message by Priyanka D. But anything you want to add before I end? You're mute, Chetali. Not able to hear you. I don't know if people are able to hear me, but I'm not able to hear you. All right. Looks like maybe she has some network issues. So guys, जाने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा एक बार फिर से, it's definitely a black day. Um, let's make sure that we continue to roar, we continue to talk about Sushant in our own way, in any way possible. We don't have to, uh, you know, do ground protest or digital protest or anything. We could just be tweeting, retweeting. We could just be talking to people in our community. We could be doing anything around this movement to create awareness, to talk about Sushant, to tell people that he was being wronged. He was wronged by his own people. And that's all we need to make this movement strong. Um, each voice, each name, each face, each hand, each tweet, everything matters. So let's make sure that we continue to roar. Let's make sure we continue to talk and spread awareness. I will continue to do whatever I can in my capacity. Uh, but, this man behind me is constantly watching us all. Constantly. ये हम में से कुछ लोगों को तो कभी भी जाने नहीं देगा till the time we get the justice. So I have taken an oath, I've always said that, and I know a lot of you have also taken an oath. So let's make sure that we stand by our oath, we continue till the end, till the time Sushant gets justice. Let's pray that 302 is imposed. Um, Let me see if I kept it somewhere else, but yeah, let me pick that up. पहले भी मैंने ये दिखाया, but एक बार फिर से, just for you all, I'm not lost. I'm very much alive. He's still there, and he will continue to be with us till the very end. I'm gonna play that video once more, and then I'm gonna end this session. But आज का दिन, please do spend maybe 30 seconds to 1 minute to pray for Sushant. Take care. Justice for SSR.